तो लेमार्क के बारे में हमने बात कर ली थी, और लेमार्क ने क्या थ्योरीज दी थी और कैसे वो सही या गलत प्रूफ की गई वो भी हमने देखा। नाउ बात करते हैं डार्विन के बारे में। सो डार्विन एक्चुअली पॉपुलेशन या इसके लिए जब जो भी इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, इट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस। ही वाज आल्सो अ इकोनॉमिस्ट। सो थॉमस माल्थस गेव अ प्रिंसिपल कि कोई भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता ही चला जाएगा जब तक कि उसमें कोई बीमारी या कोई कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी नहीं आ जाती। तो पॉपुलेशन, उसका ये कहना था कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। तो दिस वाज द प्रिंसिपल which Thomas Malthus gave, and based on this principle, Darwin got influenced to study more about the interaction of population, or whatever, how they are evolving, or how the external environment is affecting the evolution. Okay. So based on this, Darwin gave the theory of natural selection, or it is also called as Darwinism. This was proposed by Charles Darwin and A.R. Wallace in their book on the origin of species by means of natural selection. देखो यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। थॉमस माल्थस ने भी कहा था कि भाई कुछ न कुछ नेचुरल कैलेमिटी होनी चाहिए, या वॉर हो जाएगा तो भी पॉपुलेशन कम होगी, बट दैट इज नॉट अ नेचुरल कैलेमिटी, ऑल्दो there are many natural factors which affect the population size. And Darwin and Charles A.R. Wallace, what they proposed is that natural factors also causes selection. Okay. Or you can say evolution. So evolution is controlled by external factors, and in this way they proposed the theory of natural selection. Okay. So the second thing in this, before directly going into the how nature selects or all these things, the rate of appearance of new forms. ठीक है, न्यू फॉर्म्स मतलब स्पेसिएशन, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि कोई भी नया कैरेक्टरिस्टिक या नए फॉर्म्स अगर हमें लाइफ के फॉर्म के देखने को मिलेंगे, तो दैट इज बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल और एंड लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल छोटा होता है उनमें जल्दी न्यू फॉर्म्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज वेयर द लाइफ साइकिल इज वेरी लॉन्ग। ओके। क्या मतलब है इसका? हाउ लाइफ साइकिल इज playing an important role to affect the rate of appearance of new forms. Can you tell me? Anyone? यस सर। Hmm. सर लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन से ये मतलब होगा कि मतलब जितनी ज़्यादा उनकी छोटी लाइफ साइकिल होंगी तो मतलब Mm-hmm. जो ऑब्जर्व करने वाला होगा वो अच्छे से कितना वो अ, Hmm. वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट कितना कर रहा है, सर्वाइवल कितना कर रहा है, Hmm. और उसके न्यू स्पीशीज जो है वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सब अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। और उसका लाइफ स्पैन भी पता चल जाता है उससे। और जो अ, जिनका बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल होता है या फिर लाइफ स्पैन होता है उसमें ऑब्जर्वर को मतलब ज़्यादा टाइम लगता है कि या फिर ऑब्जर्वर को डिफ़िकल्टी है उसमें कि जो भी मतलब उसका Mm-hmm. स्ट्रगल कितना है Okay. एग्जिस्टेंस का और Okay. 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 प्रोडक्शन वाला। Okay. Okay. You tried very well. Okay, that is one thing. But why Charles Darwin said this is because when life span is small, there will be more number of life cycles. More number of life cycles means the organism is reproducing.
Okay, and as we know that Charles Darwin defined the fitness, biological fitness, just based on the capacity of reproduction. Okay, so when an organism is reproducing in a short period of time, new life forms can appear in their next generation if there is any external environmental factor or a pressure. There is if external and if there is an environmental pressure, new forms, new characteristics, or new traits can be observed easily. Okay, one thing that you said, that if lifespan is very long, the observer will not get enough time. Like there are, suppose if we talk about the turtles, they live approximately 120 or 180 years. There are cases where like up to 200 years turtles survive, but humans do not. So it is not like that one human is observing or one scientist is observing. Okay, there are many scientists and 7 बजे है. generations of scientists are observing. Like if some person is observing today, okay, whatever observation he is doing or she is doing, they are documenting it. Whatever they are observing, they are writing it. And when the next generation of scientists come and they again start observing it, so it is not like that one person is observing. Okay, so that problem can be resolved. But if the lifespan is very long, then new life forms will not appear very fast. Okay, but लाइफ स्पैन और सी, यहाँ पे दोनों में अंतर है. लाइफ साइकिल ज्यादा है मतलब लाइफ स्पैन छोटा है, और लाइफ साइकिल कम है मतलब लाइफ स्पैन ज्यादा है. ठीक है, तो दोनों अपोजिट है. Okay, don't get confused. The life cycle and lifespan, they are not same. Life cycle means like for example flies, they reproduce very fast. Okay, but their lifespan is also very short. Got it? So life cycle ज़्यादा है मतलब लाइफ स्पैन कम है. Clear? So both the things are correct, that the observer thing, and the second is appearance of new trait based on reproduction. ठीक है, the organism which is already uh, born. Okay, whatever the genetic information that organism is having, it has got from their parents. Okay, now in this generation, whatever the acquired characters it will get, if they go in their germline, they will be passed in the next generation. So we want more number of cycles, ठीक है, generations, to see that if any trait is uh, coming or not because of environment. Okay, so in this way they suggested that if the organism is able to reproduce, okay, the vital, uh, that organism is viable, okay, for reproduction, then nature will select. Okay, so nature selects for fitness, and the fitness here Darwin defined as reproductive fitness. Okay, this is reproductive fitness. Okay, reproductive fitness. ठीक है. Then they also like there is one example we can take, or already I have given an example, that if the organism is not able to reproduce or their reproduction capacity is decreased, so the number of individuals in that population will decrease. Okay, and as the number of population decreases, the allele frequency or whatever different life forms which can appear if population is more, they will not appear. Okay, so in this way nature selects for fitness. Okay, and the other thing is that what they proposed is branching descent.
ओके, क्या होता है ब्रांचिंग डिसेंट? So formation of new species from one, फॉर्मेशन and ऑफ न्यू स्पीशीज. likewise that characters get descend, it seems. Okay, so that is called as branching descent. So you see, we have already discussed this thing that from one population, okay, one population, we see that if this population, the individuals of this population, okay, they from this population we know that two population different population can arise, okay, because of the natural selection. And again, if there is another external factor, then there will be again division of this population into two different branches, okay, likewise. So it can go like this. So what Darwin and the A.R. Wallace they suggested is that all the living organisms which are there on our planet, they have descended from same ancestors. Okay, so that is more or less correct in one way, because if we talk about animals and plants, we all are eukaryotes. Okay, and like this there are different domains of life which we have studied in our 11th class, that there are three different domains, and likewise that from one domain to other domain there are some similarities. Okay, so in this way we can say that yes, that is true, that all the living organisms have evolved from same kind of ancestors, and with respect to time, the branching has occurred and new species are appearing. Okay, so this is called as branching descent. And the last thing that they have said is that whatever the adaptive uh, ability is there in a population, it is inherited. Is it right or not? Whether it is right or not. So it can be right, it can be wrong. Okay. So as we have already discussed that whatever the ability an organism is having, until and unless it is genetic and uh, it is present in the germline cells. Okay, like for example, the disease cancer. Okay, it has uh, one of the reason is genetic mutations. Okay, so mutations are, of course, they are occurring in the DNA. So this is a disease, okay, because of some genetic errors. But it is not necessary that the next generation will also get the same kind of cancer. Okay, they may get cancer, any other type of cancer, or maybe same, but not 100% that this person is having lung cancer, so the next generation will also have lung cancer. It is not like this. So that is genetic, but until and unless the errors are present in germline cells, whatever errors which are there, if they are present in germline cell, then only they will go into the next generation. Okay, that is what we also add here with this sentence, that until and unless it is going in germline cell. Okay, so there is another thing which we can understand at this level is, suppose there is a population, suppose this is a population. Okay, they are individuals in this population. Now this population, think in terms of evolution, like we are talking about, suppose 40,000, 50,000 years back. Okay, and there were no such whatever development we are having today, there were no things, just humans and just the external environment. So here uh, there is some external environmental pressure on this population, and a few individuals of this population
are surviving. Suppose some kind of disease has spread in this population, some infectious disease has spread, and those individuals who are not having very good immunity, they die. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप सिलेक्शन हो गया किनका, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़े, मतलब टाइम के साथ में आगे बढ़े, और फिर इस नेक्स्ट पॉपुलेशन में वही इंडिविजुअल बचे केवल जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, और अब इस पॉपुलेशन में सिर्फ वही लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कम थी उनको मार दिया गया सबको, तो उनका नंबर कम कर दिया गया। ठीक है, और सिर्फ वो बचे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी और उन्हीं ने रिप्रोडक्शन किया, तो उनका नंबर पॉपुलेशन में ज्यादा है। हो सकता है कुछ एक आध इंडिविजुअल हो जिनको डिजीज नहीं हुई हो या बच गए हो, पर उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो, वो भी इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका नंबर बहुत कम होगा, इन लेस फ्रीक्वेंसी। ओके, अब सपोज यहाँ पर कुछ दूसरा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया जो कि अब सिलेक्शन करेगा। सपोज यहाँ पर ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी। ठीक है, जैसे आइस एज के बारे में हमने बोला था कि भाई आइस एज के थ्रू भी ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन स्पीशीज गुजरी है, तो सपोज यहाँ पे आइस एज आ गई। नाउ दोज इंडिविजुअल्स who are not able to survive very cold environment and सी, क्योंकि जब आइस एज आती है या बर्फ गिरती है तो जो फूड है, फूड रिसोर्सेस है, वाटर है, वो भी अवेलेबल नहीं रहता है। तो दोज हु आर केपेबल of surviving in cold environment and capable of hunting during those cold environment were able to survive in that environment. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों की भले ही इम्यूनिटी सबकी अच्छी थी मान लिया, लेकिन जो लोग कोल्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते थे, हंगर को नहीं जीत पाए या हंटिंग नहीं करना जानते थे, वो लोग यहाँ पर कम हो गए। ठीक है, सो यहाँ से फिर आगे बढ़े, तो अब इसमें जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो सिर्फ इसमें वो इंडिविजुअल बचेंगे जिनकी इम्यूनिटी तो अच्छी है ही है, और उनके साथ में एक और चीज है कि दे आर केपेबल ऑफ फाइटिंग द कोल्ड एनवायरनमेंट। okay, I'm not talking about only humans, you can think of this in the terms of any organism, okay, any organism which is going through such। okay, या तो ये होगा कि यहाँ पे अगर मान लो कोल्ड एनवायरनमेंट आया है, तो जो लोग कोल्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो माइग्रेट कर गए, यहाँ से भाग गए, ठीक है, टुवर्ड्स वार्म एनवायरनमेंट। तो वो वार्म एनवायरनमेंट में चले गए कुछ इंडिविजुअल, और कुछ कोल्ड में रह गए। सो they will keep living at this colder environment, and these will find the warmer environment। okay, so now we will have two subpopulation just because of this one environmental factor। okay, यहाँ पे कोल्ड वाले हैं, यहाँ पे वार्म वाले हैं, तो उनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे वार्म वालों के, और कोल्ड वालों के कुछ अपने होंगे। ठीक है, that is seen in the DNA। okay, because today we are not talking about only about morphological characters or physiological characters, but also uh, the genetic sequence। okay, so here I think you have understood that how the inheritance of adaptive characters occurs, or how the nature selects। ठीक है, चले, तो दिस इज अबाउट डार्विनिज्म। And then after that there was a mutation theory which was proposed by Hugo de Vries। okay, this can be a question, who proposed mutation theory? So this is the answer। so he worked on this plant Enothera, and he proposed that there is a role of mutation in evolution, because mutation brings genetic variations। ठीक है, तो म्यूटेशन तुम लोगों को पता है क्या होता है, that suppose in a, like we have also studied the uh, sickle cell anemia disease, in that there is just one single change in uh,
the nucleotide occurs and which causes the change in the protein structure. Because of that, sickle cell disease occurs. So, but there it is causing disease. It is not necessary. Mutation can be neutral, which is not causing any disease. But if a mutation is neutral, it is we can't say that it is beneficial to the population. Okay. So this is a theory that mutation can play an important role in evolution because it brings genetic variations. Okay, so mutations. So what Darwin said, that mutations are uh, discontinuous variations. Okay, but uh, Bettison Bettison said that mutations are saltatory. ओके, दे अकर इन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप में हो गए, बहुत सारे होंगे और दे विल ब्रिंग इवोल्यूशन. बट डार्विन का ये कहना था कि ऐसा नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली अकरिंग एंड दे आर gradually they are changing the whatever the characters which we see in the population, and because of that speciation occurs. Okay, so या इसे सॉल्टेशन भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सॉल्टेशन भी कहते हैं. सॉल्टेशन का मतलब ये है कि चेंज इज अकरिंग. ओके, so there are different features of mutation theory which are, it forms the raw material for mutation. सॉरी, यहाँ पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए. दिस इज इवोल्यूशन. इट फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. ठीक है, इवोल्यूशन है यहाँ पे. सो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल तैयार करने का काम जो है वो म्यूटेशन करता है. दैट इज करेक्ट. ओके, और इट इज नॉट ऑलवेज म्यूटेशन बट वेरिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन. जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, वेरिएशन आते हैं रिकॉम्बिनेशन से. ओके, देन इट अपीयर सडनली एंड प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स इमीडिएटली if it is producing. Okay, so this is the feature that has to be means explained. Okay, so it appears suddenly and it produces effects immediately. This is not necessary. It is true that mutations जो है वो suddenly appear होते हैं, बट उनके इफेक्ट इमीडिएटली देखने को मिले जरूरी नहीं है, बिकॉज देर आर न्यूट्रल म्यूटेशंस. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दो इंडिविजुअल हैं, उन सपोज हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो दे आर हैविंग सेम हीमोग्लोबिन कंटेंट इन देयर ब्लड, वट एवर द वैल्यू इज, they are having same value of hemoglobin, but maybe they are having some variations here and there in their hemoglobin gene, so it is not causing any effect. Okay, so that is in case of disease. Okay, if a mutation is occurring in such place where it is changing the structure of protein, then it is showing the effect immediately. Then mutations are markedly different from the parents and there are no intermediate stages between the two. Okay, that is in one way true, that whatever the mutations occurring in one generation, okay, first thing is that they will get passed into the next generation, क्योंकि डीएनए जो चेंज हो चुका है वो तो अब नेक्स्ट जनरेशन में जाना ही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को फिर से पॉपुलेशन के टर्म्स में समझते हैं. ठीक है, सपोज कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ए टी टी सी जी. ठीक है, एक सीक्वेंस है. अब इसमें फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें ऐसे कैसे ही रहेगा ये, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा, ये ऐसे कैसे ही जाएगा, ए विल रिमेन ए. मतलब यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं कि भाई ए के सामने टी आएगा और टी के सामने, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं कि भाई एक स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट जनरेशन में भी उसी स्ट्रैंड में क्या वही इन्फॉर्मेशन रहती है, सो वही रहेगी टी सी जी. ओके, बट सपोज ऐसा ये तो नेक्स्ट जनरेशन में तो आया ऐसे के ऐसे ही, भाई इनहेरिट तो इसी फॉर्म में होगा, लेकिन इस जनरेशन में किसी इसके लाइफ स्पैन में बीच में कहीं म्यूटेशन हो गया. ठीक है,
जिसमें बीच में कहीं म्यूटेशन हो गया। और फिर दोबारा कहूंगा मैं ये चीज कि जर्म लाइन सेल में ये म्यूटेशन होगा तो ही वो नई जनरेशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सो दिस इज वी आर सेइंग दैट suppose this T is converted into C. Okay, so for here it is converted into C. ठीक है, ये C हो गया। अब देखें आप कि यहाँ पर म्यूटेशन जो है, ये म्यूटेशन हुआ अपने पेरेंट से अलग है, ऑफ कोर्स अलग होगा ही, लेकिन वॉट एवर द इंफॉर्मेशन पेरेंट इज हैविंग, दिस इंडिविजुअल इज ऑल्सो हैविंग। Okay, only one nucleotide is changed, rest are same. So based on this information, the sequence of genetic information, we can make a tree of evolution, that कौन किससे कब अलग हुआ है। जैसे हम बात करते हैं ना कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो हम कब एक दूसरे से अलग हुए हैं ये भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन मेक अ ट्री बेस्ड ऑन द सीक्वेंस of DNA. That's why sequencing is also important to make the evolutionary relationship between the species. ओके okay. अब देखें नेक्स्ट जनरेशन में, अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें क्या होगा, ये जाएगा ए सी टी सी जी, करेक्ट है ना। अब ये ए सी टी जी टी सी जी जो है ये इसको अपने पेरेंट से मिला है। तो earlier, at first stage of inheritance, the whatever the mutation information parent is having, the next generation will also have it. But during their lifetime, the next generation can acquire some other mutations. Okay. So suppose अगर हम बात करें कि यहाँ पे C है, this C has become G. Okay. ये G बन गया, अब ये अलग हो गया। अब आप देखो कि ये जो इंडिविजुअल है लास्ट वाला, ये और फर्स्ट वाले को अगर आप देखो तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड का चेंज है। सेकंड पोजीशन पे इसमें टी है, इसमें सी आ गया, इसमें फोर्थ पोजीशन पे सी है, इसमें जी आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, दो मतलब दो न्यूक्लियोटाइड अलग है। लेकिन फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, सेकेंड वाले से केवल एक न्यूक्लियोटाइड अलग है। अगर फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करूं मैं तो टी और सी का ही अंतर है, और सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करूं तो सी और जी का ही अंतर है। So it means that this second one is a link between first and third. Okay, so it is like this. Okay, so this is intermediate steps. Okay, and here it is saying that there are no intermediate stages between the two. So what they are trying to say here is when T is becoming C, it will just become from T to C directly. Okay, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बीच में कुछ स्टेज आएगी इनकी ना, डायरेक्टली चेंज होगा, म्यूटेशन डायरेक्टली होता है। Okay, so this is the second third statement. Mutation can appear in all directions. Okay, that is correct, they can appear in all directions. All mutations have a genetic basis and therefore they are inheritable. All mutations have a genetic basis. ये बात कब हो रही थी, 1901 में। डीएनए के बारे में या डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता चला 1952-3 में। ओके, सो 50 years earlier, Hugo de Vries have stated this thing that they are inheritable. Okay, they are going from one generation to next generation, and as we have seen that if a mutation is occurring, it will go in the next generation in the germline cell. A single mutation may produce a new species. Okay, this is a very vague statement. This is not true. A single mutation is not enough to produce a new species. Okay, although Hugo de Vries said that it can happen, we need multiple mutations to occur even to cause a disease like cancer. So if we are talking about a species, that is way too far. Okay, so this is mutation theory, and then there is a synthetic theory which was proposed by Dobzhansky in his book Genetics and the Origin of Species. This is also known as a modern synthetic theory of evolution, which was designated by Huxley.
So according to this theory, synthetic theory, there are 5 basic factors involved in the process of biological or organic evolution. एंड दीज आर, अब इसने क्या करा, सिंथेटिक थ्योरी ने सारी थ्योरीज को जो उसमें से अच्छी चीजें थी वो निकाल के सबको एक साथ रख दिया. ठीक है, क्या बोला कि देर आर जेनेटिक म्यूटेशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल, देर आर चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, देर आर genetic recombinations which are occurring, there is natural selection which is playing its own role, and then there is a reproductive isolation. Okay, so these 5 factors were there which were proposed under the synthetic theory, and this is the most accepted theory in terms of evolution or biological evolution. Okay, it explains different phenomena which are occurring in a evolution of any organism. अर्लियर सब लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली, सिंथेटिक थ्योरी उन सभी बातों में से जो भी इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसको एक साथ इन्होंने कलेक्ट कर लिया और ये सारी चीजें समझाई. ठीक है, सो आई थिंक सिंथेटिक थ्योरी के जो 5 पॉइंट है इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही.